एसएस दो तरह की सेवाएं प्रदान करेगा। मानक अवस्थित सेवाएं यानी स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज जो सभी के लिए उपलब्ध होंगी, और प्रतिबंधित सेवाएं रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो कि एक गुप्त लिखित सेवा है जिसका उपयोग केवल प्राधिकृत उपयोक्ता ही कर सकेंगे। मुख्य सेवा क्षेत्र में ये प्रणाली 20 मीटर से बेहतर शुद्धता प्रदान करने की क्षमता रखती है। ऐसी नौवहन उपग्रह प्रणाली अमेरिका के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, रूस के ग्लोनास, यूरोप के गैलीलियो के समान ही है। चीन और जापान के पास भी बिदऊ और क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम नामक प्रणालियां उपलब्ध हैं। इस समय हम प्रक्षेपण से लगभग 5 मिनट की दूरी पर हैं और सारी गतिविधियां बिल्कुल निर्बाध रूप से जारी रहते हुए इस समय सुचारू रूप से सारे कार्यक्रमों को दर्शा रहे हैं। इस उपग्रह के अंतिम निरीक्षक श्री नदरई और आप अंदर का सभी जो दृश्य है वो बाकायदा अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विशेषज्ञ लगातार आंकड़ों पर नजर जमाए हुए आपके सामने। So very close to -4 minutes, 30 seconds for the launch. The automatic launch sequences has been checking out the vehicle parameters, and look at the screen clearly indicates the health parameters have been checked out very smoothly. Just a quick update on the flight sequence. On ground, along with the solid core stage, there will be ignition of 4 solid strap-ons, which are also called as a ground lead strap-ons. So totally, we will have 5 motors which is being fired on the ground. This will be followed up by the ignition of the remaining 2 strap-on boosters at about 25 seconds into the flight, called as the air lead strap-ons. And the ground lead strap-ons burns for nearly 70 seconds. Once the burn out of the ground lead strap-ons are completed, they are jettisoned in flight, followed by the jettisoning of the air lead strap-on at 90 seconds into the flight. So countdown is at -3 minutes 40 seconds. यह सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रक्षेपण स्थल पर मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहना। अब तक मौसम का जो सवाल है वह पूरी तरह से प्रक्षेपण के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। सुबह से आसमान में हल्के हल्के छुटपुट बादल थे, कुछ धुंधल का जरूर था, पर शाम होते होते आसमान बिल्कुल साफ हो गया है। दिन भर दोपहर की तपती धूप और अत्यधिक तापक्रम के कारण यूं तो बाहर निकलकर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वैज्ञानिकों के हृदय में विश्वास और विज्ञान की इतनी ठंडक है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ढलता हुआ सूरज संपूर्ण भारतवर्ष के नौवहन प्रबंधन को एक आशातीत पैगाम देकर जाएगा। हमने प्रक्षेपण मुहिम के साथ ही लगातार मौसम और हवा की गति पर नजर रखी है और आज जमीन पर हवा की गति भी खासी सामान्य, वैसे लगभग 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। वायुमंडल में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर आज सुबह मापी गई वायुगति द्वारा कार्यक्रम को आवश्यकता अनुसार पुनः अभिकल्पित किया जाता है ताकि आरोहण के दौरान वायुगति की घर्षण भार को अल्पतम किया जा सके। आज प्रातः किए गए विस्तृत अनुकरणों से प्रतीत होता है कि सभी मान अपेक्षाएं नियत सीमाओं के अंदर हैं। सुबह के अवलोकनों के आधार पर वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र भी स्वीकार्य है। प्रक्षेपण के लिए यह विद्युत क्षेत्र 1000 वोल्ट प्रति मीटर से कम होना चाहिए ताकि तड़ित की किसी भी संभावना को नकारा जा सके। इस समय हम लगभग 2 मिनट की दूरी पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण प्रक्षेपण के हिसाब से होते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण। एक और बात जो प्रमोचन के होने या न होने से जुड़ी होती है। इस विश्लेषण का आधार है संघट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे किसी भी संभावित टकराव से बचने के लिए प्रमोचन समय को उपलब्ध प्रमोचन विंडो में उचित रूप से समायोजित कर लिया जाता है। शार से किए गए पिछले कई प्रक्षेपणों में अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण करना एक प्रमाणित तरीका है। पिछले कुछ प्रक्षेपणों में इसी अध्ययन के आधार पर प्रमोचन समय में 1 से 2 मिनट की देरी की गई थी और वर्तमान में PSLV-C32 जो IRNSS-1F को ले जा रहा है, ऐसे प्रक्षेपण में भी इन्हीं गणनाओं के आधार पर 1 मिनट की देरी हुई है। इस समय हम लगभग
50 सेकंड की दूरी -50 पर। seconds. Less than 1 minute for the launch. To be very precise, we are at minus 45 seconds. So all eyes on the lower stage of the rocket. -40 seconds. So as per the planned sequence, we should have the ignition of the -35 solid seconds. S139 and 4 strap-on motors. -30 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Roger. -25 seconds. Minus 25 seconds. -20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1. PS1 on ground three, lit So strap-on vehicle ignited. lift off +5 Vehicle seconds. with Lift-off, S139 and 4 ground lit strap-on motors. +10 seconds. You can see Auto the tracking. view of the PSLV. बिल्कुल आकाश 15 साफ और एक अच्छा दृश्य। प्रमोचन यान बिल्कुल 20 अपने seconds. गंतव्य की ओर First stage आकाश performance में normal. आगे बढ़ता हुआ और 25 जोरदार गर्जना के साथ Air एक lift strap-on लकीर, ignited. एक इबारत लिखता हुआ 30 seconds. 6वां उपग्रह इस नौहन उपग्रह प्रणाली का। +35 seconds. So at 25 seconds into the flight, we had the ignition of the air lift Plus 40 strap-on as well. The time right now is 40 seconds. So at 70 seconds, we 45 should have the separation of the ground lit strap-on, which were ignited along with the S139 stage, 50 seconds. followed by the separation of the air lit strap-ons at 90 seconds. So far, Plus 55 seconds. the parameters indicates a very close match with respect to the time and altitude, Plus 1 time minute. and velocity. 60 seconds into the flight, the vehicle is right now almost 18 kilometers from the launch base at an altitude of around 23 kilometers. जी हाँ, बिल्कुल सामान्य Ground lift निष्पादन strap-on प्रथम separated. चरण का Auto in main auto. इसकी घोषणा भी की गई और प्रथम Star चरण one in main लगभग auto. 108.86 सेकंड में सेपरेशन कर जाएगा, पृथक हो जाएगा और ऊंचाई उसी में लगभग 56 किलोमीटर होगी और इस समय हम करीब करीब बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं पृथक्करण के। Air lit As strap-on planned, the separated. ground lit strap-on And was separated at PS1 70 performance seconds, followed normal. by the separation of the air lit strap-ons at 92 seconds when the vehicle was at an altitude of 40.8 kilometers. We just now heard the announcement air lit strap-on has been separated. The flight is at 108 seconds now. Anytime we should hear the announcement. Yes, the PS1 has been separated successfully at 108 seconds. And the second stage, the PS2 has been successfully ignited. +2 minutes. जी हाँ, प्रथम चरण अलग भी हो चुका है और द्वितीय चरण प्रज्वलित होते हुए यान अपने गंतव्य की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ और ये द्वितीय चरण जो है वो लगभग 152 सेकंड का प्रज्वलन काल लिए हुए है, जहां पे वो करीब करीब यान को 134.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचा देगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण सामने आएगा जब हीट शील्ड सेपरेशन होगी, पेलोड जो फेयरिंग है वो सेपरेट होगी, उसका पृथक्करण होगा करीब करीब 194.96 सेकंड्स के बाद, जब ऊंचाई लगभग 113 किलोमीटर होगी और उस समय वेगमान लगभग 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। इस समय हम लगभग 160 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं। As you would have seen on your screen, with respect to the time versus altitude profile, the time versus velocity profile, a very close match with respect to the predefined flight parameters. And this is the view of the ground trace as the vehicle has left the launch base and going through the various regions in terms of the +3 minutes. longitudes. In terms of the time, it is at 180 seconds now. Altitude is around 110 kilometers. Very closely, we should have the announcement for the payload fairing separation, which should happen nominally at around 110 kilometers. So just now we have a confirmation payload fairing has been separated at 194 seconds when the vehicle altitude was around 113.3 kilometers. बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। इस समय ऊष्मीय सुरक्षा कवच वो अपने यान से अलग हो चुका है और जो उपग्रह है उस पे जो ऊष्मीय गतिकी भार है वो लगातार उसके जो बाहरी कवच होते हैं, बाहरी जो सतह होती है उन पे आपतित होता है। इस समय बिल्कुल सामान्य निष्पादन जो वेगमान है वो करीब करीब 3.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है और हम श्रीहरिकोटा से लगभग 405-410 किलोमीटर की दूरी प्राप्त कर चुके हैं और ऊंचाई करीब करीब 130 किलोमीटर की प्राप्त की जा चुकी है। बिल्कुल अभीष्ट जो निष्पादन है वो है, जो अवलोकित पथ है वो
बिल्कुल अपेक्षित पथ से बिल्कुल तालमेल रखता हुआ आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल सामान्य निष्पादन। 255 seconds, very close to the PS2 burnout. PS2 stays Yes, separated. PS2 has successfully PS3 burnt stays out, ignited. separated, and the command for the ongoing third stage, the PS3, has been issued at 260.9 seconds. The vehicle is at an altitude of 130 seconds, 136 kilometers. Third stage And performance if you normal. look at the view of the altitude profile, this being a eastward mission and the orbit being a kind of a sub-GTO orbit, you can see a very shallow altitude profile as far as the PSLV trajectory is concerned. But not to forget a very close match with respect to the predefined flight profile. Time, velocity, all matching well. The PS2 performance has been Plus 5 nominal. minutes. PS3 ignition also confirmed nominal and delivering the required Bias velocity extend. that is required to proceed ahead with the launch. आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे चेयरमैन इसरो श्री एस किरण कुमार जी को और उनके साथ विभिन्न केंद्र के निदेशक बाकायदा और आंकड़ों का अध्ययन करते हुए आप देख पा रहे हैं कुन्नी कृष्णन जी को जो शार के निदेशक हैं, उसके बाद चेयरमैन, फिर बीएसएससी के केंद्र निदेशक महोदय श्री शिवन जी, फिर सोमनाथ जी एलपीएससी के, फिर उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के श्री तपन मिश्रा जी। इसलिए विभिन्न जो केंद्र निदेशक महोदय हैं वो भी आंकड़ों पर बेहद गहन निगाह जमाए हुए और सामान्य निष्पादन तृतीय चरण इग्नाइट हो चुका है। द्वितीय चरण का निष्पादन बिल्कुल सामान्य था। 260.9 सेकंड के बाद तृतीय चरण इग्नाइट हुआ था और उसका लगभग जो बर्निंग टाइम होगा, प्रज्वलन काल होगा, वो करीब करीब 395.8 सेकंड का होगा। इस समय हम करीब करीब 362 सेकंड की जो समय है वो पार कर चुके हैं। वेलोसिटी लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। हमें जो अभीष्ट वेलोसिटी, अभीष्ट वेग मान है जो प्राप्त करना है वो लगभग 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड का होना चाहिए। ये श्री जय कुमार जी आप सामने देख पा रहे हैं, उनके बगल में उमा महेश्वरन, पीएसएलवी और जीएसएलवी के परियोजना निदेशक। 385 seconds, which is the nominal time at which the PS3 should burn out. And after the burnout of the PS3 stage, as you may be aware, we have the separation of the stage happening only after around 270 seconds to allow for the residual thrust of the third stage to fully subsidize so that the ongoing stage, the PS4, could be ignited at 10 seconds after the separation. So right now we are at 410 seconds. The PS3 has burnt out. The velocity that has been added to the vehicle is around 7.33 km per second. Plus 7 minutes. And the net velocity that it should impart for placing the satellite into an orbit of 284 by 20,650 will be of the order of 9.6 km per second. So right now the vehicle is in the coasting phase where you don't have any thrust activity being performed by the rocket stages. The whatever energy has been gained by the launcher is being converted into potential energy. Vehicle is continuously in the ascent phase and we are at an altitude of 154 kilometers. And the vehicle has moved a downrange of almost 1,700 kilometers. जी हाँ, IRNSS-1F को 284 किलोमीटर उपभू या पेरिजी और 20,657 किलोमीटर अपभू या जिसे हम एपोजी कहेंगे वाली दीर्घवृत्तीय उपभूतुल्यकालिक कक्षा या सब जीटीओ ऑर्बिट का है प्रक्षेपित किया जाएगा, जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 17.86 डिग्री झुकी हुई होगी। इस प्रारंभिक कक्षा में अंतःक्षेपण या इंजेक्शन के पश्चात उपग्रह में लगी दोनों सौर पट्टिकाएं पूर्व नियोजित व समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप प्रस्तरित हो जाएंगी या डिप्लॉय हो जाएंगी। उपग्रह से संकेत मिलते ही कर्नाटक के हासन जिले में स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा भू केंद्र मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी एमसीएफ हासन उपग्रह को अपने नियंत्रण में ले लेगा। फिर कुछ समय अंतराल के बाद उचित कक्षा और कक्षीय बिंदुओं पर द्रव अपभू मोटर या लैम्प के प्रज्वलन द्वारा इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन करेक्शन कक्षीय त्रुटि निवारण करके कक्षा में अभीष्ट उत्थापन किया जाएगा। अंततः उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री आनत पर झुकी हुई होगी 32.5 डिग्री पूर्व देशांतर में। उपग्रह को की अभियान अभिकल्पित कालावधि लगभग 12 वर्ष की होगी। इस समय हम कोस्टिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। कोस्टिंग पीरियड
वो क्षण होते हैं जब Plus 9 minutes. जो तृतीय चरण है वो बर्नआउट हो जाता है और चौथा चरण जो है वो प्रज्वलित नहीं होता है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे कमेंटेटर साथी श्री राधा कृष्ण जी आपको बता रहे थे कि ये क्षण है जब हम गतित ऊर्जा जो सॉलिड मोटर की होती है उसका उपयोग करके सीधे सीधे उसको स्थैतिक ऊर्जा में बदलते हैं, जब केवल हम ऊंचाई प्राप्त करते जाते हैं। इस समय हम लगभग 563 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं और वेलोसिटी जो वेग मान है वो करीब 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है और रेंज करीब करीब हम शेरकोटा से 2600 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। ऊंचाई 178 किलोमीटर की और अजीमत जो है वो 102 डिग्री प्राप्त किया जा चुका है। इस समय जो निष्पादन है वो बिल्कुल अपेक्षित जैसा हमने उम्मीद की थी वैसा ही यान आगे बढ़ता हुआ। So 590 seconds, the velocity is 7.3, altitude 181. So as per the nominal Plus 10 planning, minutes. we should have the separation of the third stage in the next 50 seconds, which is at 656 seconds, when the altitude should be around 190. This will be followed up by the ignition of the fourth stage, also called as the PS4 stage, in the next 10 seconds. So maybe another 40 seconds to go before the PS3 stage gets separated from the PS4 and followed by the ignition of the fourth stage. So right now we are in the coasting phase and the vehicle is reached an altitude of around 187 kilometers. As per the nominal mission planning, the fourth stage should take the vehicle to an altitude of around 438 kilometers and it should have imparted a velocity of 9.6 kilometer per second to make the satellite inject into an orbit of around 284 by 20,600, where the orbital inclination is around 17.866. So this mission of IRNSS-1F, which is the eastward mission Plus from the 11 launch minutes. base, is a totally planar trajectory without any yaw maneuver. We just now heard the announcement, PS3 has been separated at 6:55 seconds. PS4 engine started. And PS4 engine also has been successfully ignited. बहुत बहुत महत्वपूर्ण तृतीय क्षण बिल्कुल अभी हाल ही में पृथक हुआ है यान से और चतुर्थ जो चरण है, अंतिम चरण जो है, जो लिक्विड स्टेज है, वो इग्नाइट हो चुकी है, प्रज्वलित हो चुकी है और हम अपने गंतव्य की ओर लगातार आगे बढ़ते हुए ये जो चतुर्थ चरण है वो लगभग 517.46 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। काफी लंबा समय है। एक्चुअली अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो चार चरण है वो चारों चरण एक दूसरे अलग होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जो पृथक्करण प्रणालियां हैं, ये घटनाएं होती हैं। बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित और संघट मुक्त हो, माने बिल्कुल इंपैक्ट फ्री होना चाहिए ताकि यान अपने पथ से भटके ना। ये पृथक्करण घटनाएं अभियान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए इनकी अभिकल्पना पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित और सख्त बनाया जाता है। PSLV-C32 32 में ऐसी कुल 6 पृथक्करण घटनाएं हैं। अभीष्ट कक्षा में पहुंचने के बाद IRNSS-1F को, उपग्रह को, कुछ महत्वपूर्ण प्राचल कुछ इस तरह से अपेक्षित होते हैं ताकि हम उन्हें जैसी उम्मीदें हैं वैसे प्राप्त कर सकें। PSLV में अनेक पृथक्करण प्रणालियां हैं, जैसे प्रथम चरण को यान से फ्लेक्सिबल लीनियर शेप्ड चार्ज एवं 8 रेट्रो रॉकेट्स पद्धति द्वारा तथा 2 हिस्सों में बने ऊष्मीय सुरक्षा कवच के दोनों भागों को लीनियर बेलो सिस्टम एक्सप्लोजिव कार्ड द्वारा अलग किया जाता है। मरमर बैंड बोल्ट कटर पृथक्करण प्रणाली का उपयोग करके द्वितीय चरण और तृतीय चरण को अलग करने के लिए बॉल रिलीज प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पायरो थ्रस्टर सेपरेशन रिंग को आवश्यक घूर्णन प्रदान किया जाता है। उपग्रह को अंतिम चरण से पृथक करने के लिए पुनः एक बार मरमर बैंड प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। पृथक्करण के लिए आवश्यक बल कैनिस्टर में लगे 8 स्प्रिंग थ्रस्टर की सहायता से प्रदान किए जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि कैसे हम इन प्रणालियों से अलग अलग चरणों को हम यान से अलग करें ताकि उसका इम्पैक्ट ना हो और बिल्कुल सामान्य निष्पादन। एक लंबा समय अभी प्रज्वलन का व्यतीत होना है। हम लगभग 806 सेकंड व्यतीत कर चुके हैं। हमें करीब करीब 1211.18 सेकंड का समय व्यतीत करना है कुल, जब हम करीब करीब 488.9 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे और वेगमान 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। So into the PS4 flight, almost 200 seconds of burn of PS4 has happened. Right now the velocity is around 7.8 kilometers. As you have seen on your screen,
The orbital velocity to Plus be 14 minutes. in an orbit of around 200 by 2000 has already been achieved, has been imparted by the vehicle. The vehicle is at an inclination of 17.83 degrees. So another 200 seconds to go into the PS4 stage of flight. Right now the vehicle is already in the orbital phase. And as you will see, during the next 300 seconds of firing of PS4, the perigee will gradually increase because it has almost reached 200 kilometers. All that it has to reach is 284. But what is important is during this next 300 seconds of flight, the velocity addition will happen to the apogee. Right now, we see the apogee is roughly around 3,000 kilometers, which at the end of the mission should reach somewhere around 20,650 kilometers. So we are at 886 seconds. The altitude profile on your screen, the red one is the one, bottom curve is the altitude profile, the pre-flight, and what you're seeing with the green color is the one which the vehicle is presently going through. Plus The top 15 curve minutes. is the velocity profile. You can see a very close match between the pre-flight and the one which is being achieved during this particular flight. So velocity around 8 kilometers, another one more 1.2 kilometer velocity to be added subsequently to ensure that IRNSS-1F gets into an apogee of around 20,650 with a perigee of around 250 kilometers. We have another 100 to 150 seconds to go into the flight before we hear the announcement that PS4 has been shut off, finally injecting the satellite IRNSS-1F in the desired orbit. जी हाँ, जैसा कि अभी आपने सुना, बहुत महत्वपूर्ण ये क्षण, क्योंकि इस समय चतुर्थ चरण में पेरिजी और अपोजी, जैसा अभी इसमें हाल में जो इनके मान है वो करीब 218 किलोमीटर पेरिजी है और करीब 4,600 किलोमीटर एपोजी है। लेकिन जो प्राप्त करना है एपोजी वो करीब 20,000 किलोमीटर, 20,657 किलोमीटर प्राप्त करना है। तो इस समय हम ये देखेंगे कि जो ऊंचाई है एपोजी की वो लगातार बढ़ती जाएगी और यही वो क्षण होता है जब हम अभीष्ट कक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम झुकाव देखें कक्षा का तो 17.84 है, जो हमें 17.86 डिग्री प्राप्त करना होता है। अगर हम आईआरएनएसएस उपग्रह की बात करें तो इसे 32.5 डिग्री पूर्व की लॉन्जिट्यूड में स्थापित किया जाएगा। इसका जो लिफ्ट ऑफ मास है वो 1425 किलोग्राम का है, जिसमें 598 किलोग्राम भार है वो शुष्क भार है, ड्राई मास है। और फिजिकल डायमेंशन अगर हम देखें तो करीब 1.58 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर का एक छोटा सा क्यूबॉइड है ये उपग्रह, जिसमें बहुत ही आधुनिक प्रणालियां मौजूद हैं। पावर के हिसाब से देखें तो 2 सौर पट्टिकाएं लगेंगी जो करीब 1660 वाट पावर माने 1.6 किलोवाट पावर जनरेट करेंगी। और अगर जब हम ग्रहण की स्थिति में रहेंगे तो एक इसमें 90 एम्पियर आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है और इसमें जो लैम है, जो द्रव अभ्भू मोटर है, वो करीब 440 न्यूटन के इंजन है और इसमें अलग अलग कोनों में उपग्रह के 22 न्यूटन वाले 12 थ्रस्टर लगे हुए हैं। कंट्रोल सिस्टम जीरो मोमेंटम सिस्टम है और इसमें सन सेंसर, स्टार सेंसर, गायरोस्कोप, रिएक्शन व्हील्स, मैग्नेटिक टार्कर, ऐसे कई नियंत्रण प्रणालियां लगी हुई हैं। इसकी जो मिशन लाइफ है वो करीब 12 साल की होगी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज अर्थात शार के नाम से भी जाना जाता था। इसे इसरो का अकेला ऐसा केंद्र है जहां से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में समुद्र के किनारे स्थित है, जो पुलिकैट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इस समय हम करीब 1076 सेकंड का समय व्यतीत करते हुए, हरी जो लाइन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो अवलोकित पथ है और जबकि जो अनुमानित पथ है वो रेड लाइन से लाल रेखा से दिखाई पड़ रहा है। चमकता हुआ बिंदु वर्तमान स्थिति प्रमोचन यान की बताता है। So 1094 seconds, 8.8 kilometer, less than 100 seconds before PS4 gets burnt out. And if you look at the orbit, right now it is 247 by 12,450. There is a continuous increase of the apogee as the velocity addition is getting fully pumped up into the apogee. So right now we are at 13,000 kilometer apogee and 250 kilometers perigee. Another 50 to 60 seconds before the PS4 cutoff is announced. A very close match with respect to the altitude and velocity, which basically is depicting that PS4 performance has been absolutely nominal and as desired.
And if you look at the PS4 cutoff command, it should happen at 1174 Plus seconds, 19 maybe minutes. around less than 30 seconds. And as you may be aware, during the entire phase of flight, right from liftoff to the various stage, there are a number of real-time decisions that are taken based on the onboard computer that resides on the launch vehicle, which basically ensures that the stages, once they burn out, are properly detected, and the command is given for the next ongoing stage to take the action of ignition and the separation subsequently. So less than 10 seconds to go into the flight. We have almost reached the apogee of 19,600, very close to the 20,000 kilometers with 283 kilometers. PS4 engine shut off. PS4 shutoff has Conditions been are executed at 11:75 seconds successfully, and we see a very close match to the pre-flight number of 284 kilometer perigee with an apogee of 20,655 and orbital inclination of 17.86. So after the PS4 shutoff is executed, in the next 37 seconds, we should hear the 20 announcement minutes. of separation of IRNSS-1F, which should happen at 1,211 seconds. There may be another 5 to 6 seconds to go before we hear the announcement of IRNSS-1F. Right now, the satellite in the upper stage, yes, IRNSS-1F has been successfully separated at 1,212 seconds in a very, very precise orbit of 284 by 20,650 kilometers. जी हाँ, बहुत ही सफल क्षण। इस समय हम जो यान है वो 1212.4 सेकंड के बाद में अभीष्ट कक्षा देते हुए यान से अलग हो चुका है और सभी निगाहें उस घोषणा की ओर थीं जब यान अलग होगा। इस सारे प्रसारण तक आप हमारे साथ लगातार बने रहे, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। इस समय एमसीसी के अंदर बिखरे हुए उत्साह में शामिल होने के लिए आइए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Hello. Good afternoon to all of you. Today we had the 6th satellite of our regional navigation satellite series going into the orbit, and now the PSLV-C32 has put the satellite into the right orbit, and we have only one more satellite in this constellation to complete our sequence of 7 satellites for the regional navigation satellite, which we expect to do sometime next month. And I would request Jay Kumar to brief us on the initial parameters. Good evening. Today is a very important day for ISRO. The 6th satellite of our own navigation system, the PSLV-C32 vehicle, has placed in orbit very safely and that too very precisely. You have seen the orbit achieved, the perigee achieved is very close. I am not finding any difference from the 284 kilometer what has been specified to the vehicle. So vehicle has done the job wonderfully. And inclination achieved also is very close. In fact, as you know, this time also we have employed the most powerful variant of PSLV, that's we call as PSLV XL vehicle. And this always, if you see the previous IRNSS satellites missions also, all the satellites have been positioned very precisely into the orbit. And of course, that joy we can see on the face of the satellite director, because whatever fuel he has apportioned for initial correction, satellite orbit correction, that can be saved. It can be used for the extending the life of the satellite, at least by 2 years. That's what I presume. So really it's a wonderful thing. In fact, now you know this mission, PSLV-C32, our team ISRO has performed, they have accomplished within just 50 days from the last mission that we had on 20th of January. That too another XL vehicle. That is the XL vehicle, is the most complicated vehicle we have in the PSLV series. And the team could do it. And as you know, this stacking also, vehicle stacking for the subsequent mission, 32, has been done just 4 days after the accomplishment of the last mission, PSLV-C31. This is the way, the dedication and the sincerity that our team ISRO has towards
accomplishing the targets set to them. This is a really, let me thank and each and every one of you for the excellent achievement. Let us have the one more, another record is this financial year, we could complete 5 successful missions of PSLV. That's also another record now. But we are planning for 6 numbers, narrowly we missed. We'll be performing immediately the next month. And let me take this opportunity to express my gratitude and congratulations to each and every one of you, the team ISRO, as well as our seniors who has been with us in always guiding whenever we face some issues, and the industry counterparts. In fact, they are the very great contribution we have been getting from them consistently. Whenever there is a requirement, they are coming forward and helping us. Let me take this opportunity to thank them also. I also wish satellite director to commission the satellite at the earliest. Thank you. Good evening. Today, by completing 33 consecutive successful missions, PSLV has once again demonstrated its capability and status as one of the most reliable and sought-after vehicles in the world. As it was indicated, the 6th navigation satellite in the 7-satellite constellation has already been placed into a very precise orbit by PSLV-C32, which took off from the 2nd launch pad at Sriharikota. The launch campaign of this mission could be commenced just in 4 days after the successful accomplishment of our previous mission PSLV-C31 from the same launch pad. Let me compliment various teams involved in making the elaborate launch campaign more comfortable and more professional, improving continuously from mission after mission. At this juncture, at this great moment, I would like to congratulate the entire ISRO team, all the members of ISRO centers and units, DOAs, a multitude of industries across the country for their incredible contributions and unstinting support for achieving this success. Our next mission, the launch campaign activities, have already been commenced in the first launch pad in parallel, and PSLV-C33 will be launching IRNSS-1G satellite. This mission is going to be a milestone mission for India, completing our own constellation of navigation satellites, and let's all work together to accomplish this major achievement of ISRO in the next month. Thank you. Good evening to all of you. First of all, let me congratulate and compliment the entire team, ISRO, as well as our industry partners to achieve such a wonderful mission. Yesterday, our chairman took a review what's have in our pocket. We have exciting days ahead. We are going to start next mission with the last of that IRNSS series and going to end this year with a spectacular mission of lifting the heaviest satellite from Indian soil by GSLV Mark III D1. In between, we are going to have a host of PSLV missions as well as GSLV and reusable launch vehicle technology demonstrators. And when we discuss about the readiness of the system, it is very heartening to note that we are already in place for next mission. Also, our industry partners as well as our integration team and SHAR team is gearing up to take up the further challenges to meet that, the missions we have planned for this year. Let me wish all the best for the entire team to achieve success after success for this year and, of course, on dot. Thank you. Let me join Chairman ISRO and Center Directors and the Mission Director in congratulating entire PSLV team spread across all the ISRO centers for this fantastic achievement.
The PSLV-C32 has done its job exceedingly well, and the 6th satellite of the IRNSS series is in orbit now. We have one more mission to go in the IRNSS series. I wish all the best for the team IRNSS in providing the much expected service of navigation services to this country. I also want to thank the entire ISRO team behind this work, not only for the success, but also for making the vehicle and the mission possible in such short span of time. I also want to thank the industry captains who are here to witness this launch. We have a few of those captains here. I take this opportunity to thank all of them for their fantastic support in meeting our demands, which is extremely difficult nowadays because that we are ramping up the whole production and launch activities in much faster pace than that we have done earlier. And they are responding to us very positively. And also within our house also, the support we are receiving from all the employees has been so great. That's why we are able to do it faster and also with great quality and reliability. Thanks you once again for the wonderful success. Let us decide that we will continue this, not only in the PSLV, but also the coming launches of GSLV, which is scheduled the middle of this year, and also GSLV Mark III after the successful test of the C20 engine. For the second engine, we had tested for 640 seconds successfully. With that, we are through with the development of the engine. We have only one more test to go, and the stays are getting ready, and we hope this launch will definitely take place by end of this year. Wish all the best, and congratulations once again. Thank you. Good evening to all of you. As PD PSLV has explained, this is the first time we are able to do 5 missions in a year, placing the 5th satellite of IRNSS series in orbit. And this is indeed a great achievement, and the time frame in which this launch was done in just 50 days put a lot of pressure on the team that is working on these launches, both in the centers as well as in the industries. And the response showed was tremendous. And with this kind of a response, we'll be able to take this forward. There is no doubt in what Director LPSC has demanded, that we'll be able to achieve higher launches in the coming years to come. This launch has also happened on the sidelines of International Women's Day, and I would like to take this opportunity to congratulate all the women employees of ISRO as well as in IPRC for their great contribution, and wish you all the best for the future. Thank you. Respected Chairman ISRO, distinguished professors, my dear colleagues all over ISRO DOS, let me first congratulate from the bottom of my heart for the very successful mission just now we had. We are nearing the full constellation of 7, 6 already is in orbit. It's a fantastic achievement and the dream come true for India to be totally self-reliable on satellite navigation is a great achievement for years to come. And now, at this joyful occasion, I would like to mention that every time we give a very precise orbit injection and the expectations are very high to give the same kind of accuracy every time is highly giving pressure and very sensitive. And we are very proud to say that this, yet again, we have given the excellent accuracy and which has made the further spacecraft operations very simple and the life will be more. And at this junction, let me congratulate all the ISRO DOS colleagues on behalf of ISRO Inertial Systems Unit and my own behalf, all the very best and hearty congratulations. Thank you. Good evening to one and all. PSLV has done its job very well once again. Now satellite has taken over, and the MCF has already taken over the control, and both the panels have deployed, and it marks basically it is a double century of sort in the space. I think south panel of IRNSS-1F deployed. It is a 200th successive
deployment in the space, and 201 has happened on North Panel. So at that time, I think I thought of bringing late M. Satyanarayana, who was the bismarck of all the mechanisms of the space mechanism when IRNSS-1F started. I think put in record his contributions and the groups on that. And having done that, I think as already told, the Indian admission life of 12 years, possibly we can be able to extend that also. So that way, next 14 years of life of IRNSS-1F started with the 5 more in the gang in the sitting there, and 7th one is coming. That is, having done this, 10 days from now, IRNSS-1 will be in its slot, and possibly a month from there, it will get into operational into the 6 satellite configuration is concerned. Then what next is concerned, possibly a month from now, we will be able to bring IRNSS-1G, which is in a thermobaric condition with all the 6 systems are working well. Subsequently, we will be ready for the Carto 2C, SCAT-SAT, INSAT 3DR, A18, GSAT 18, like that, yeah, a good number of things coming. That means today we are celebrating for this, and there is no reason to get complacent. Definitely a good number of satellites, even though 5 we realized last 12 months. Many more has to be queued up. Many more we are making it up, and ensure that every one of them reaching the launch pad in the intended target time. Towards that, all the centers meant for the satellite, the ISRO Satellite Center, as well as the combined units working for centers are doing well. And both technical as well as the teams, supporting teams, all the way from administration to the canteen, to the library, to the purchase accounts, every one of them they are contributing to the level. The required infrastructure also coming up in a much better way. All the things putting together, the chairman's target of not getting satisfied to even 5 we make it, 7, 10, I think that the asking rate is going up and up and up. And though we are making a 200 in the case of deployment, I think similar centuries are expected, even the launch also. Possibly satellite team also live to the occasion, and very best to everyone and all. Thank you. श्री किरण कुमार सर, अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था और सभी केंद्र का निर्देशकों ने और इसरो का जितने वैज्ञानिक अभियंता और कर्मचारी है, आप सबको बधाई और अभिनंदन। और ये IRNSS श्रृंखला का 6ठा उपग्रह का उत्क्षेपण है, और चंद एक महीने पे हमारा 7वां उपग्रह का उत्क्षेपण होगी। और इसी का साथ मेरा विश्वास है IRNSS ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बेहतर दिशा दिखाने वाला नेविगेशन सिस्टम होगी। और ये मौका पे मैं जो आज तक जो 7 पेलोड भेजने वाला जो टीम है, जो हमारा भारत अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की श्री दीपक दास और TVS राम का नेतृत्व में जो टीम आज ये 7 पेलोड भेज चुके हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ और समस्त इसरो का वैज्ञानिक और अभियंता को ये मौके पे बधाई देता हूँ। नमस्कार। I would just like to point out the satellite which we launched on January 20th. Today, the alert flag on the system has been lifted, and the signals are available for use for navigation purposes. So within about a month and a half, now the whole system has become fully operational. And I'm sure by the time we put the next satellite of this constellation into orbit, this satellite signals also will be fully available for navigation purposes. I take this opportunity to congratulate each one of you for the wonderful job you are doing. We have a long way to go. Let's keep it up. Thank you.